Hello everyone. Very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SAMCO Securities. I hope I'm audible and I hope you all are able to see my screen. If you can give me a heads up in the chat box. अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो. So we'll just wait for a minute or so. I see that people are joining in. एंड अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करके बता देना. Oh great, JL Traders is here. Good evening to you. Achi Reddy ji is here as well. Great, good evening. All perfect. Sunil ji is here. Yes, Sunil ji, great. How's trading going on, guys? कैसा चल रहा है आपका? I hope you all are making money. I think अभी तो markets are in a downtrend currently. Uh, So I know for a fact that I think almost all the portfolios would be in red at this point. बट अगर आपने शायद काफ़ी पहले ही अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दिया होगा तो यू वुडंट हैव विटनेस्ड उतना बड़ा इम्पैक्ट बट स्टिल द डेली फ्लक्चुएशंस वुड बी वेरी मच. वेरी गुड इवनिंग सर, सेम टू यू अच्छी रेड्डी जी. ग्रेट. सो हाउ इज इट गोइंग गाइस? कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग? एक बार आप मुझे एक बार बता दो चैट बॉक्स पे. Are you all making money? Are you all losing money? Or are you all sitting on the sidelines at this point of time? If you can let me know in the chat box. So, last 2 days we did see a couple of so we saw short covering happening in the markets in the last 2 days. I think something जो हमने पिछले लास्ट लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था कि हो सकता है आपके मंथली एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है बिकॉज there were too many shorts that were created in the markets. Also, the FPIs were holding a lot of short positions. So ये जो लास्ट 2 दिन से ये जो ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हो, पर्टिकुलरली कल जो बैंक निफ्टी में एक अच्छा कैंडल बना था, निफ्टी में जो अच्छा एक मूवमेंट आया था, दैट वाज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द शॉर्ट्स गेटिंग कवर्ड. चांसेस आर दैट शायद कल भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है. आई मीन दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. Because if you look at last 2 to 3 days data, foreign portfolio investors have started covering their shorts. The long short ratio has improved a bit. हम लोग देखेंगे long short ratio. If you remember, it was hovering in the 30-35% range. It has come to 40% now. That is mainly because some shorts have got covered. So looking at, so let us start off with the analysis first, guys. So let's do the Nifty analysis first. फिर हम बैंक निफ्टी एनालिसिस पर जाएंगे. देयर सम मतलब क्लियर कट लेवल्स आज आपको दिख के आएंगे. सो विल look at the charts now. We'll analyze Nifty charts. We'll look at the data points, and then we'll go to the 5 minutes chart and we'll see what are the levels जो आप कल के सेशन में ट्रैक कर सकते हो. सो कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी का, तो कल रोल ओवर डेटा भी आएगा. So that will give some cues as to what can probably happen in the month of November. And also, I think US is going for election on 5th of November. I think the result is on 6th of November, if I'm not wrong. So that is, one important event that the markets are going to track. Uh, First को you will have the auto numbers going up. अगर आप देख रहे हो लास्ट 2-3 दिन से almost all the auto stocks are down. So probably one interesting thing to see will be as to क्या auto numbers कैसे आ रहे हैं for the month of October. Then we also have the Maharashtra elections coming up. Maharashtra elections are on November 20th. The result is on 24th. So November is going to be eventful month for sure. But before that, we have the Murat trading on Friday from 6 to 7 p.m. in the evening. By the way, how many of you all have logged into our Samco's app?
and have seen uh, is Diwali पूजा वाली insights वाली campaign that you can see on our app here. कितने लोग ने वो देखा है? How many of you all have actually tried that out? I think you would have got some more trading picks as well. So if you've been someone who's been using Samco app a lot, शायद आपको दिखा होगा यहाँ पे. Analysis not work, but trade work perfectly. Okay, superb. Great. So before we start, guys, I would want to know how many of you all have seen our the Lakshmi Puja campaign uh, that we have run on our Samco's app. शायद आपने देखा होगा. आपने थाली घुमाई होगी एंड शायद आपको कुछ recommendations मिले होंगे, stock recommendations मिले होंगे. So how many of you all have seen that? If you all can let me know in the chat box. अगर नहीं देखा है तो आज सेशन के बाद ज़रूर जाके चेक करना वहाँ पे. ठीक है. तो चलो लेट अस स्टार्ट ऑफ विथ द निफ्टी एनालिसिस फर्स्ट. तो ये है आपका निफ्टी का डेली चार्ट. So what is your view on Nifty, guys? I think nothing much has changed in Nifty. Nifty is still in a downtrend. अगर आप लास्ट 2 दिन देखोगे तो वी हैव सीन सम पुल बैक कमिंग इन निफ्टी. बट ये जो दो पुल बैक हमें जो लास्ट 2 दिन से दिखाई दिया, दैट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग. But again, nothing has changed structurally for Nifty. We are still seeing a lower high formation here. एंड आज अगर आप देखोगे इट स्टार्टेड ऑफ नेगेटिवली टुडे एंड आज एक ऑलमोस्ट एक ग्रेवस्टोन डोजी जैसा पैटर्न बना है, which is probably it's a weak pattern. It's not a very strong pattern here, and we are way below 50 EMA as well. So what is how are you all looking at Nifty, guys? If you all can let me know in the chat box. आपका क्या व्यू है निफ्टी पे? आप एक बार मुझे चैट बॉक्स पे बता सकते हो. Are you all bullish on Nifty? You feel probably we have bottomed out and chances are that the price can go up from here. और आपको लगता है शायद और डाउन ट्रेंड यहाँ से और कंटिन्यू हो सकता है. So let me know how are you all looking at Nifty, guys, in the chat box. I can see Viral ji, Achi ji, Sunil ji, JL Traders, and all the others. Your best full downside. Yeah, I feel the bulls have not yet come in. तो हो सकता है आई थिंक दिस डाउन ट्रेंड माइट कंटिन्यू. दो सम डेरिवेटिव डेटा इंडिकेटर्स हैव चेंज, बट अगर आप कैश मार्केट में देखोगे तो स्टिल एफपीआईज हैव नॉट स्टार्टेड बाइंग येट. सो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है उनका सेलिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, whereas the DIIs have bought close to 99,000 crores. So DII and FII have been playing the tug of war game for the whole of October here. Luckily, the retail participation as well as the amount of cash that the DIs are holding, हम लोगों को इतना बड़ा impact देखा नहीं है markets में. So I think thanks to us, thanks to the retail investors का participation up and also जितना cash DIIs के पास है, अगर शायद ये नहीं होते and if FPIs would have continued their selling, so probably हो सकता था शायद we wouldn't have been looking at Nifty at 24,000 today. It would have been much lower. But overall, I think structure it's still negative. No positive signs yet. But one interesting observation is let us look at the long short ratio, guys. I think one thing that I wanted to show is हम देख रहे थे 23rd 24th अक्टूबर को द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो वाज अराउंड 35%. एंड अगर आप लास्ट 3 दिन से देखोगे 25th अक्टूबर इट वेंट टू 37, 20th अक्टूबर इट वेंट टू 40, 29th अक्टूबर इट वेंट टू 40%. सो द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हैज इम्प्रूव्ड. तो जो एफपीआईस के पास जो 35% लॉन्ग पोजीशन थे दैट हैज गॉन टू 40%. सो इफ आई लुक एट द डेटा हियर, सो लेट मी जस्ट ओपन अप द डेटा फॉर यू. This is my FPI data. Let us see what is happening on a daily basis. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे if you look at the short positions on 25th, let's say from 24th 3,17,000 short positions, 3,08,000, 2,86,000 and it has come to 2,75,000. So हम लोग clearly देख रहे हैं कि यहाँ पे FPIs जो इतना short positions बना के बैठे थे, they have started covering up their shorts. इसके वजह से हमें वो लास्ट 2 दिन में एक बाउंस बैक देखने को मिला है, बट इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्सल हो ये. Yeah, I'll talk about the stock as well.
सिप्ला का भी मैं बताता हूँ टुवर्ड्स द एंड आई विल टेक दैट क्वेरी ऑफ so the only positives from the long short ratio is that अपना जो long short ratio है from 35% it has gone to 40%, whereas FPIs are still holding 60% short position. तो FPIs अभी भी short positions ज़्यादा hold कर रहे हैं as compared to long positions here. But there has been some improvement, थोड़ा short covering है, हो सकता है कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है तो शायद ये short covering मूव देखने को मिले. So don't rule that out. If I have to show you what has happened in the cash segment, let me show you what the FPIs are doing in the cash segment here. अगर मैं monthly की बात करूँ, look at the amount of selling that FPIs have done in the whole of October. Just 1 lakh 4,018 crores, 99,000 crores DIs have bought. So luckily DIs have balanced it out. So FPIs have not bought a single day in October. I think that is what I could see here. So chances are that शायद दिवाली के बाद FPIs आना start करे. Because some money has moved to China, chances are that now they are keenly tracking what is going to happen in the US. हो सकता है with maybe whoever comes to power there, whether it's Kamala Harris government or whether it's Donald Trump, hope so they will also make sure that the money comes to their economy as well. So हो सकता है थोड़ा flows can come to US. But so we'll have to keenly track कि क्या होता है. But at some point of time FPIs will come to India. और कब आएंगे, that is something that we need to see or. So long short ratio has improved, so that is one slightly positive data here. अगर हम PCR की भी बात करें, so if you see PCR was at 0.75, it has gone to 0.84, it has gone to 0.92. So हम ये भी देख रहे हैं कि जो आपका पुट कॉल रेशियो है, दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पुट राइटर्स इन रिलेशन विद द कॉल राइटर. सो द PCR हैज आल्सो improved a bit here. I'll come to that GL traders and Viral जी, मैं बताता हूँ आपका. So the PCR has also slightly improved a bit, which is so अगर आप देख रहे हो लास्ट 2 डेज से जो थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है स्ट्रक्चर में, जो शॉर्ट कवरिंग मूव की वजह से जो आपका कॉल राइटर्स है उन्होंने अपना पोजीशंस थोड़ा ऑफलोड किया है and the price has gone up a bit. If we look at India VIX, I think there is one interesting observation in India VIX which I was just seeing before the session. अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं, लेट मी ओपन अप द डेली चार्ट ऑफ इंडिया विक्स योर. अगर हम डेली चार्ट देखें इंडिया विक्स का, सो यू कैन सी, अगर अब ये हमने पिछले 2 सेशन पहले भी देखा था कि ये जो 15.5 लेवल्स है इंडिया विक्स का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. बट योर यू कैन सी 6 सितंबर को इंडिया विक्स ने ऑलमोस्ट 15.5 का हाई बनाया था और वहाँ से वॉलेटिलिटी कूल ऑफ हुआ था. फिर से 7 अक्टूबर को इंडिया विक्स ने अराउंड 15.5 का हाई बनाया, नीचे आ गया. अगर आज देखोगे इंडिया विक्स अभी 15.5 लेवल्स पर ही है. तो ऐसे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रही है यहाँ पे. अगर ये 15.5 के ऊपर चला जाता है, लेट्स से इट गोज टू 16 एंड इफ इट ब्रेक्स दिस 15.5 इट क्लोजेस अबव, अगर वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ती है शायद हो सकता है कि निफ्टी करंट लेवल से और गिरे. बिकॉज वॉलेटिलिटी गिरना मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ना मतलब फियर आना मार्केट्स में, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आपका जो निफ्टी है वो करंट लेवल से गिर सकता है. सो कीप अ ट्रैक ऑन इंडिया विक्स गाइस, बिकॉज 15.5 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर इंडिया विक्स. और अगर मैं लास्ट में ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ, वी स्टार्टेड अक्टूबर सीरीज विद 1 करोड़ 71 लाख शेयर्स. और कल की मैं बात करूँ तो अब 29 अक्टूबर को हो गया 1 करोड़ 47 लाख शेयर्स. बट अगर मैं 2-3 दिन पहले देखूँ, इट वॉज एट 1 करोड़ 58, 1 करोड़ 53, 1 करोड़ 45, 1 करोड़ 47. सो वी कैन सी आपका ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है. एट द सेम टाइम जो आपका प्राइस है 24,181, 24,339, 24,467, ये आज का क्लोजिंग नहीं है. सो लास्ट 2 दिन अगर आप देखोगे आपका प्राइस ऊपर गया है और ओपन इंटरेस्ट गिरा है, एंड दैट इज मेनली दैट इंटरप्रिटेशन उसका ऐसा होता है कि जब आपका ओपन इंटरेस्ट गिरता है और प्राइस ऊपर जाता है, दैट इज नथिंग बट शॉर्ट कवरिंग. तो ये जो लास्ट 2 दिन से जो ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं हमें निफ्टी डेली में, दैट इज नॉट लॉन्ग एडिशंस, कोई फ्रेश लॉन्ग एडिशंस हुआ नहीं. इट्स जस्ट दैट जो इतना जो एग्जिस्टिंग जो शॉर्ट पोजीशंस बना था उसको बस कवर हुए हैं, जिसके वजह से एक बाउंस बैक दिखने को मिली है. बट ओवरऑल द स्ट्रक्चर इज स्टिल नेगेटिव, though there are some improvements in the derivative data points here.
तो हो सकता है अभी भी एफपीआई के पास 60% शॉर्ट पोजीशन है, कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, हो सकता है कल वो अपना पोजीशंस काटे, जो शॉर्ट पोजीशन है वो काटे, जिसकी वजह से एक अच्छा एक्सपायरी हमें देखने को मिले। सो दैट इज समथिंग वील हैव टू सी टुमारो, एंड कल शाम को ही वो रोल ओवर डेटा आएगा। सो ऑन दैट बेसिस थोड़ा हमें अंदाजा आ जाएगा कि क्या है, व्हाट आर द एफपीआईज डन, एंड व्हाट इज इट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर ईयर। बट कल के दिन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल के दिन के लिए, लेट अस लुक एट द ऑप्शन चेन फर्स्ट बिफोर वी गो टू द की लेवल्स। अगर मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन देखूं, 31 अक्टूबर, द मंथली एक्सपायरी टुमारो, if I look at the total OI, the maximum OI is at 24,500. That is where the maximum call writers are. So जहाँ पे ऐसे स्ट्राइक पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स है वो आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। और अगर आप देखोगे डाउन साइड में जो आपका सपोर्ट है, द स्ट्राइक विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पुट राइटर्स, वो है आपका 24,000। सो 24,000 तो अभी भी काफ़ी दूर है करंट लेवल से, बट द की लेवल दैट आई एम ट्रैकिंग फॉर टुमारो इन निफ्टी इज 24,500 गाइस। नाउ आई विल शो यू व्हाई 24,500 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी। ये मेरा डेली चार्ट है। यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड आई विल गो टू 5 minutes चार्ट हियर, एंड लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट, and this is what I want to show you. Now if you look at Nifty's 5 minutes chart here guys, here we can see on 28th of October Nifty took a resistance around 24,500 level, फिर निफ्टी नीचे आया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, यहाँ पे आप देख रहे हो नेक्स्ट डे 29 अक्टूबर को भी एक 24,500 वाला लेवल है, फिर से यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है और नीचे आया है। देन अगेन निफ्टी हैज ट्राइड गोइंग अप। अगर आप देख रहे हो आज का कैंडल, ये भी आप देख रहे हो अराउंड आज का 1:05 में एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाता है एट द सेम लेवल विच वॉज 24,500 ईयर। एंड हमने अभी ऑप्शन चेन में भी देखा कि 24,500 में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। सो वी कैन सी दैट निफ्टी पिछले 3 दिनों में ये जो 24,500 लेवल है वो तोड़ नहीं पा रहा है, इट इज़ नॉट एबल टू गो पास दी 24,500 लेवल। तो कल का ट्रेडिंग सेशन के लिए, कल जो निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें क्या आपका रणनीति होना चाहिए और या आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सो कीनली लुक एट व्हाट इज हैपनिंग एट 24,500 गाइस, बिकॉज हमें दो चीज़ मालूम है कि 24,500 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पिछले 3 दिन से। सेकेंडली हमें ये भी मालूम है कि ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स जो स्ट्राइक पर बैठे हैं वो है आपका 24,500। टू थिंग्स कैन हैपन, या तो कल 24,500 में फिर से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आ सकती है और 24,500 में कॉल राइटर्स अपना पोजीशन और स्ट्रेंथन करें, दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज, हो सकता है वी माइट सी निफ्टी गोइंग अबाउट 24,500, अच्छा ब्रेकआउट दे हमें 24,500 के ऊपर। और जब ये ब्रेकआउट होता है आपको ये भी देखना है कि ये जो 24,500 में जो कॉल राइटर्स बैठे हैं वो अपना पोजीशंस को ऑफलोड कर रहे हैं। So you have to see that the call writers are exiting from 24,500. At the same time, put writers are creating pressure by building positions at 24,500. बिकॉज अगर वो होगा, अगर 24,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिलेगा और वो क्लोज सस्टेन होता है फॉर लेट्स से फॉर 10 एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स आफ्टर द मार्केट ओपन्स, चांसेस आर दैट हमें एक अच्छा एक्सपायरी देखने को मिले निफ्टी में। सो द वन लेवल दैट यू हैव टू ट्रैक इन निफ्टी इज 24,500 guys, but ठीक है, even if the adjustment happens before the market opening विरल जी, you will at least come to know कि अगर ज़्यादा गैप अप है, let's say if it opens about 24,500 itself, हो सकता है 24,500 तक आए। ये जो 24,500 अभी एक रेजिस्टेंस है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और यहाँ से ऊपर जा सकता है। या अगर गैप डाउन भी होता है, हो सकता है शायद वो गैप डाउन होते ही ऊपर चले जाए और 24,500 फिर से एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाए इंट्राडे बेसिस पर। बट वॉट एवर इज द केस में भी, चाहे वो गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, द नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी विच यू शुड बी लुकिंग एट इन निफ्टी शुड बी अराउंड द 24,500 मार्क। तो आपको प्राइस एक्शन में 24,500 के आसपास क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू सी। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे जो कॉल राइटर्स बैठे हैं 24,500 में, वो यहाँ पे अपना पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं
या वो अपना पोजीशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं यहाँ पे. सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू ट्रैक इन निफ्टी फॉर टुमारो गाइस. तो और फिर उसके बाद जो रोल ओवर रिपोर्ट आएगा वो तो कल के दिन के बाद आने वाला है. बट फॉर टुमारो सेशन the important level that you need to track in Nifty is 24,500. I hope that is very clear to you. Now let us go to Bank Nifty analysis. Now, if you all can let me know, guys, आप Bank Nifty को कैसे देख रहे हैं? What is your view on Bank Nifty? If you all can let me know in the chat box. सुनील जी saying go up. हो सकता है अगर ये जो 24,500 अगर आप हमने देखा कि ये 5 मिनट जो चार्ट है, 3 बार निफ्टी ने 24,500 में रेजिस्टेंस लिया है. तो कल देखना होगा कि 24,500 निफ्टी तोड़ता है कि नहीं. अगर अच्छे से तोड़ता है तो हो सकता है कि 24,500 में जो कॉल राइटर्स बैठे हैं वो भी अपना पोजीशंस एग्जिट करें. अगर कॉल राइटर्स एग्जिट नहीं कर रहे 24,500 में और हमें गैप अप ओपनिंग मिलता है, हो सकता है वो एक फेक ब्रेकआउट भी होगा. बिकॉज वो 24,000 में जो ऑप्शन एक्टिविटी होगा 24,500 में, that is something that you need to keenly track for tomorrow's session in Nifty. So keep an eye on that, guys. 24,500. ठीक है. Now let's talk about Bank Nifty. Now this is the daily chart for Bank Nifty here. If you all can let me know in the chat box, आप Bank Nifty का how are you all looking at Bank Nifty? If you all can let me know. अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में एक दो दिन से काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है हमें. एंड येस्टरडे वाज वेरी गुड डे फॉर बैंक निफ्टी. काफ़ी अच्छा ऊपर गया था. बट अगेन दिस इज आल्सो मेनली ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग. काफ़ी सारे शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे इस पीरियड में. एंड वी कैन सी दैट बैंक निफ्टी हैज़ गॉन अप. बट अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट देखूँ, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है. अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी एक रेंज पे ही मूव कर रहा है. सो इफ इन सी 52,300, 52,350, that is the upper range for Bank Nifty. Go down if Nifty correct because बैंक को पैसा मार्केट से ही रिटर्न होगा. मार्केट पॉजिटिव, बैंक पॉजिटिव. या एब्सोल्युटली. बट इफ यू सी ऑन द डाउन साइड, जो लेवल हमने डिस्कस किया था पिछले लाइव सेशन में, विच वॉज योर 50,300 लेवल्स के आसपास. बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी यहाँ पे एक सपोर्ट लिया अराउंड 50,300. देयर वाज अ सपोर्ट टू अराउंड 50,300. एंड वी कुड सी दैट बैंक निफ्टी यहाँ पे भी 50,300 के आसपास सपोर्ट लेके वो एक बाउंस बैक दिया है. So this is that one level that we were keenly tracking since last couple of sessions. See बैंक निफ्टी हो सकता है अभी वो पिछले रेजिस्टेंस पर भी आ गया. लास्ट टाइम इसी लेवल पर गया था. इट मेड अ हाई अंटिल 52,577 और वहां से नीचे गिर गया था. अब ये 52,354 का हाई बना है. और आज आप देखोगे एक मेनली इट लुक्स लाइक अ बेरिश हरामी पैटर्न हियर, where the body of red is inside the body of a green candle here. जब एक रेड बॉडी एक बड़ा ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर होता है, सो दैट काइंड ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड एज अ बेरिश हरामी पैटर्न. एंड इट इज यूजली कंसिडर्ड एज बेरिश रिवर्सल पैटर्न ईयर. मतलब एक अप ट्रेंड के बाद देखते हैं, आई वोंट कॉल दिस एज एन अप ट्रेंड, बट एक अच्छा मूव के बाद यहाँ पे एक बेरिश हरामी पैटर्न मिला है. सो दैट इज स्लाइटली इंडिकेटिंग टूवर्ड्स वीकनेस ईयर. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को, एक अगर बर्ड्स आई व्यू ले हम बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी एक एक प्रॉपर कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है यहाँ पे. इनफैक्ट आज के डेट पे अगर हम देखोगे तो एक्सिस बैंक आज नीचे था, आईसीआईसीआई बैंक भी नीचे था, आई थिंक इवन एचडीएफसी बैंक वाज डाउन. तो जो मैं बोलते आ रहा हूँ काफ़ी लाइव सेशन से, अनलेस एंड अनटिल एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक डोंट पावर अप टुगेदर, चांसेस आर दैट शायद बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करते रहे. So what is your view on Bank Nifty? If you all can let me know in the chat box. I think विरल जी ने यहाँ पे बता दिया है. What about others? Now let me look at the option chain for Bank Nifty. तो Bank Nifty का we'll look at 6th November expiry. अगर मैं 6 नवंबर का एक्सपायरी देखूँ यहाँ पे, आई सी दैट द 52,000 लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी. माना कि इसमें जो कॉल राइटर्स है वो सबसे ज़्यादा 53,000 लेवल पर है. बट 53,000 इज स्टिल वेरी फार फ्रॉम वेयर बैंक निफ्टी इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अभी बैंक निफ्टी 51,807 पर है.
So the nearest level to Bank Nifty is right now is at 52,000. So 52,000 में कॉल राइटर्स है एंड वही ऐसा स्ट्राइक है जहाँ पे पुट राइटर्स भी है. तो अगर आप देखोगे पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के बीच काफी स्ट्रॉन्ग टक्कर चल रहा है यहाँ पे 52,000 स्ट्राइक पर. तो लेट मी लुक एट द 5 मिनट्स चार्ट हियर. मैं 5 मिनट्स चार्ट पर जाता हूँ. लेट मी रीसेट द चार्ट. इसको मैं एक फिलहाल के लिए डिलीट करता हूँ. नाउ लुक एट दिस 52,000 लेवल गए. जैसे हमने 24,500 देखा था निफ्टी में, अब हम देखेंगे ये 52,000 जो लेवल है बैंक निफ्टी में वो काफी इंपॉर्टेंट क्यों है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर. यहाँ पे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 52,000 लेवल के आसपास. यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था 21 अक्टूबर को 52,000 लेवल से, फिर से नीचे आ गया. यहाँ पे आप देख रहे हो एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें मिला था 52,000 लेवल के आसपास. फिर वो 52,000 लेवल के नीचे आ गया. इट केम अंटिल ऑलमोस्ट 50,300 ऊपर चला गया. यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से 52,000 लेवल को ब्रेक किया और ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर से नीचे आ गया. और अगर मैं आज की सेशन की बात करूं, ये देखो 52,000 लेवल में काफ़ी हेजिटेशन है अमंग्स दी बायर्स योर. बिकॉज एक ये वाला ऐसा लेवल है 52,100 और अभी तो 50,000 के नीचे है. बट यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो बायर्स को दबा के रखे. दे आर एबल टू एंश्योर दैट द बायर्स डोंट पास दिस लेवल योर विच इज़ द 52,000 लेवल. और ये हमें ऑप्शन चेन से भी दिख रहा है. देखो यहाँ पे 52,000 में कॉल राइटर्स बैठे हैं. So the level that you need to track in Bank Nifty for tomorrow's session is the 52,000 level. अभी तो फिलहाल कॉल राइटर्स लीडिंग है पुट राइटर्स से. अगर कॉल राइटर्स अपना पोजीशन ऐसे ही मेंटेन करते हैं तो हो सकता है कि 52,000 ब्रेक ना हो और वहां से बैंक निफ्टी नीचे आए. बट अगर पुट राइटर्स एक कम बैक करते हैं 52,000 लेवल से और यहाँ से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है कि द बैंक निफ्टी माइट स्टार्ट मूविंग अप फ्रॉम हियर. So if I have to summarize two key levels in Nifty and Bank Nifty, 24,500 निफ्टी में और आपका जो 52,000 लेवल है वो आपका लेवल होगा बैंक निफ्टी पर. सो दीज आर द टू की लेवल्स दैट यू नीड टू ट्रैक योर. मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर शोइंग स्ट्रेंथ. विद्या जी ऐसे बता रहे हैं. लेट मी लुक एट मिड कैप एंड स्मॉल कैप. So if I look at the mid cap index here, प्रेटी मच सिमिलर. तो अगर आप देखोगे निफ्टी में भी ये जो शॉर्ट कवरिंग है लास्ट 2 दिन से जो हमने सारे इंडाइसेस में देखे, दैट इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट कवरिंग. ये जो इतने सारे शॉर्ट पोजीशन है, अगर आप स्ट्रक्चरली देखोगे मिड कैप में, इट इज स्टिल लोअर हाई फॉर्मेशन अब तक नेगेट हुआ नहीं है. देर इज दिस हाई, देर इज दिस हाई, अब तक तो ये हाई बना नहीं है. एंड इवन इफ आई एम लुकिंग एट स्मॉल कैप में भी योर वी कैन सी भले ही लास्ट 2-3 दिन से एक मोमेंटम पिकअप करते हुए नजर आ रही है. भले वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है. फॉर यू टू सी आपको एक हायर लो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए. सो देयर इज अ लो योर, देयर इज अ लो, देयर इज अ लो योर, देयर इज अ लो. तो एक हायर लो स्ट्रक्चर दिखता है तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता है वो ट्रेडर्स को. बट जब तक आपका ये लोअर हाई स्ट्रक्चर नेगेट नहीं होता है, चांसेस आर दैट ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी. क्लियर. तो ये था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस. और I hope it was good. So 24,500 in Nifty and 52,000 level in Bank Nifty here. So that was about Nifty and Bank Nifty analysis, guys. Chalo, now I'll take your stock queries. I think somebody had asked me about सिप्ला क्या करना चाहिए. चलो देखते हैं हम सिप्ला को. हाँ, the chart of Cipla seems to be interesting. I think यहाँ पे एक RSI divergence होगा. Let me look at RSI here. So here we can see the price was making higher highs, the RSI was making lower highs here, and I think ये काफ़ी strong downtrend में अब सिप्ला पे. इसका जो सपोर्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है सिप्ला में, probably it could be this. So let me draw up a support level for सिप्ला. अभी तो 1418 में है. सो आई कैन सी 1300 से 1320 जोन्स के आसपास. 1300 से 1320 जोन्स के आसपास एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है.
So अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आई वुड सजेस्ट यू होल्ड ऑन टू दैट स्टॉक बट कीप अ ट्रैक ऑन 1300 1320 levels here. I think somebody had asked me about Cipla. I can't recollect the name now. If you have any other stock queries, guys, do let me know in the chat box. I think I hope everyone is aware about what has happened with LSID investments. आई थिंक वो एलसिड इन्वेस्टमेंट्स एक ऐसा स्टॉक है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, वो मेनली दूसरे कंपनी के शेयर्स बाई करते हैं. सो डिविडेंड्स इज देयर सोर्स ऑफ इनकम, प्राइस अप्रिसिएशन इज अ सोर्स ऑफ इनकम ईयर. तो बीच में एक सर्कुलर आया था जहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व किया था कि एलसिड जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो काफ़ी अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे. तो उनके लिए एक स्पेशल कॉल ऑप्शन रखा गया था एक प्राइस डिस्कवरी के लिए. और आई थिंक एलसिड इन्वेस्टमेंट्स अब तो एमआरएफ को भी बीट कर दिया. इट हैज़ गॉन टू 2,36,250 रुपीज़ पर शेयर. इट्स स्टिल वेरी इनलिक्विड. तो ये सारे, इसके लिए आप देखोगे सारे जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है और ये जो होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, आई थिंक वो काफ़ी इसके वजह से भाग गए थे. अगर आप देखोगे शायद पिलानी इन्वेस्टमेंट्स का भी ऐसे ही हुआ था. So LSID Investments was in the news yesterday. Viral ji saying, so just for curiosity, if DI had not supported market, then what is the level of Nifty? Means up to what level? So I don't know up to what level we could have seen Viral ji, because ये जो कोविड का जो फॉल हमने देखा था तभी खुद एफ पी आईज ने अराउंड 40,000 crores उन्होंने निकाला था वहाँ पे. दिस वॉज बैक देन इन 2020. So today FPIs have taken out around 1 lakh crores. So you can see the intensity there. But I think COVID के बाद we could see a lot of retail participation picking up. वो काफ़ी awareness उसी time के बाद आ गया था. So thanks to that retail investors का पैसा and DII is holding a lot of cash with them. So if the same thing would have happened plus COVID, I think we would have been in a pretty bad situation now. But touch wood, I think Indian markets are strong, and thanks to guys like you and me, and also the uh, uh, the domestic institutional investors here. Geo Finance. Okay, let me look at Geo Finance. Geo Finance is also moving in a sideways trend, but I think I could see that it is at a very good support level here. So I feel this might be a very good support level for Geo Finance, which is near about 300 zones, 300, 305 zones. I think that is a good level that you can track. Because देखा गया है कि 305 जोन से जियो फाइनेंस में एक रिवर्सल आई है, एंड दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर जियो फाइनेंस. अगर ये ब्रेक होता है तो हो सकता है शायद वी माइट सी जियो फाइनेंस dipping even further. But I think you can look at 300, 305. That is the range that you can look at Geo Finance here. Uh, should we average PSU stocks? Maybe I won't say not all the stocks. Uh, Probably if you have identified some few fundamentally good stocks, and if you have conviction that these stocks can go up again, then those are the stocks that you can consider buying in this dip here. Uh, but ensure that you only average out fundamentally good stocks and not all the stocks just because the whole PSU index is down. But definitely good fundamentally sound stocks is something that you can definitely look at. I think Dushyanji is mentioning RVNL. I know for a fact that a lot of these defense companies and rail companies, वो जो एक period था जहाँ पे हर दिन भाग रहे थे, अभी वो थोड़ा नीचे आ गया है. But they will recover at some point of time. I feel recovery might come in. If I look at RVNL, RVNL is also at a very good support level. Dushyan ji, यहाँ पे let me just take this marker. I'll mark this zone for you. Look at this zone very carefully. This was on 3rd June 24. We can see 425. It gave a breakout from 425. It now the same resistance acted as a support here. It acted as a support here as well. So I feel this.
probably around 420, 425 will be a good support level. It is above that now. It is near about 465. Uh, so maybe if you are looking to add here, uh, wait for it to see if it comes back to 420, 425 levels again. But if you have this stock for long term, I think, and if you feel that the fundamentals of the stocks are good, you can definitely add this in your portfolio. By the way, RVNL was one of the stocks that we recommended as part of our Murat campaign as well. So this is one of our Diwali picks. So right now it is at 465. It bounced back from a very good support level here. So I think RVNL, the structure is looking good. The only downside that I see in RVNL is that it is still hasn't negated the lower high formation, but I think that is the same with almost all the stocks here. But it's good. Once the FPIs come back to our markets and once we see that positive sentiment back in our markets, I think the markets will back to how it was probably 3-4 months back. RVNL is good, दुष्यंत जी. I just mentioned about RVNL here. मैं आपका ही query लिया था यहाँ पे. Vivek ji saying PFC, BHEL, SBI. I think sir, PSU stocks looks like almost everyone has an eye on PSU stocks now. Uh, Looks good. I think I can see PFC has support around 430. 430 is a good support level for PFC, Vivek ji. If I look at BHEL, let me look at BHEL. By the way, I hope you all know Swiggy is coming up with an IPO. November 6 to November 8 is when the window will open. BHEL, okay, BHEL is also at a very good support point. So here you can see, I think the one observation that I've been, uh, I think one observation is that almost all these PSU stocks that we are seeing here, whether it's RVNL, PFC, BHEL, SBI, almost all these stocks वो correct होके वो जो previous जो resistance है, those zones are acting as a support for these stocks. So it's very important that Nifty bottoms out very soon and starts going up. Uh, Else what can happen is we might कुछ नहीं होगा, थोड़ा और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा. सो इफ यू फील दैट द स्टॉक्स दैट यू आर होल्डिंग, अगर आपको अच्छा कन्विक्शन है, तो आई थिंक इवन इफ यू बाय एंड इवन इफ इट लेट्स से करेक्ट्स by 5-10%, but if you feel that long term it will perform, you shouldn't be panicking about that fall here, because ultimately you can't time the market. It's just that identify some key levels with the help of technicals, but ensure that you are investing in fundamentally sound stocks, and stay away from penny stocks, guys, because not every penny stock is going to make you money. What are the major signs for common people to confirm the bottom? Uh, First of all, I think right now the structure is very important. Right now, if you look at Nifty's chart, it is moving in a lower high formation. That should change from lower high to a higher low. At least we should see a bounce, we should see a correction, we should see that Nifty picking up again. And FPI is coming back to Indian markets. That is also a very important sign. I know a lot of people focus on retail participation and DI participation, and all that is very good. But we have seen in the past that जब FPI पैसा निकालता है, we could see that pressure. And हमने ये भी देखा है कि whenever FPI money comes back to our markets tend to perform well. So keep a track on what the FPIs are doing. Uh, देन चांसेस आर दैट नाउ ऐसे भी बोल रहे कि शायद जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, यूएस ने तो कट कर दिया था उनका इंटरेस्ट रेट, ऐसा बोल रहे कि शायद दिसंबर में वी माइट सी रेट कट कमिंग इन. सो राइट नाउ इट इज एट 6.5, चांसेस दैट 25 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है, इट कैन कम टू 6.25. So chances are that can also be one of the triggers for the markets to move up. So interest rate. Then you can also look at what is happening to the oil prices, because we don't want rising oil prices here, because still we are heavily dependent on imports. So agar oil prices niche hai, that is a good sign for us. That is one trigger that you need to look at. Then you also look at dollar index. अगर आप देखोगे dollar index, वो अभी वो 104 105 levels के आसपास है. I think that should also cool down, because if dollar appreciates against all the other currencies, it's not a very good sign for the emerging markets. So those are the you know
three four important key points that you need to monitor. And obviously then we have whether we have the inflation in control, because काफी टाइम से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल पे है, वो बैंड पे है कि नहीं. Then we have to see how's the manufacturing picking up, manufacturing के signs कैसे है, purchasing manager index. So you get a lot of data points. What are the auto numbers? So you need to have a macro picture of what's happening with the economy. And then you have to look at आपका जीडीपी ग्रोथ कैसा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ के साइंस कैसे है, इज इट मूविंग अप, इज इट फ्लैट. So these are the things that will give you some sort of indication as to what can probably happen to the market side. Best ETF for the next 1 month. uh, I don't know. I think any ETFs is good. I think I would say, uh, you can look at adding Nifty Bs at this point. I think Nifty Bs. I think the one major sign is, I think, silver Bs, gold Bs. I know for a fact that look at what has happened to gold and silver. काफी ऊपर चले गए. I think gold Bs, silver Bs are doing really well. Then you have gilt Bs. Gilt funds है, उनके Bs है. So gilt ETFs is also something that you can look at. uh, so these are the sites. वारी एनर्जीज, ओके, लगता है आपको आईपीओ में लगा है. वारी एनर्जीज, too early to talk about this. I think let the price settle down. अगर आपको ऑलरेडी लगा है तो आई थिंक यू कैन होल्ड ऑन टू इट. बट आई थिंक ये हुंडा में भी ऐसा ही हुआ था, डाउन था एंड देन वी कुड सी सम रिकवरी. बट आई थिंक अगर आपको ऑलरेडी लगा है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर व्यू. इफ यू आर होल्डिंग इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, यू कैन होल्ड फॉर इट. अगर शॉर्ट टर्म है, देन इट डिपेंड्स. योर व्यू चेंजेस बेस्ड ऑन आपको कितने पीरियड के लिए वो स्टॉक रखना है. सो अगर लॉन्ग टर्म है तो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट. Hyundai भी देखोगे, it has gone down and we could see some kind of recovery coming up now. So that was about Vari Energies and ETF. So probably you can look at gold Bs, silver Bs, Dikshit ji. ठीक है. BDL, आई थिंक आज के सेशन में काफ़ी सारे PSU स्टॉक्स मिले यहाँ पे. आई थिंक लेट्स लुक एट BDL. Same. I think even if you see, BDL is also at a very good support point, 103010. The previous resistance is acting as a support now. I think 1030 is your. अच्छा, IPO में लगा है अनन्या जी सिंह. Okay, great. Super. I think from what I could make out is PSU stocks are at a very good support point. Nifty, not sure if we have seen any reversal yet, though there are some signs of improvement, but long positions build हो रहे अब तक दिखे नहीं है. FPIs have not come back to our Indian markets. Uh, but I think the markets will be keenly tracking what is going to happen in US and also what is going to happen in Maharashtra elections here. So couple of big elections coming up, and I think markets are definitely going to take cues from that. ठीक है. So I think I have tried to answer a majority of your questions, and so that's all from my end, guys. If you have any other questions, do let me know. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. So that's all from my end. Before I sign out, I wish you all a very happy Diwali and a prosperous new year. Uh, Enjoy time with your family, guys. A very happy Diwali to all of you. And Murat session है Friday को from 6 to 7 p.m. And see you all next Wednesday, guys. We'll meet again next Wednesday at 4 o'clock. And until then, take care and stay safe. And a very happy Diwali to you and your family. Take care and stay safe, guys. Bye.